Hello everyone. In Genetics Introduction Part 2, we will discuss few more terms regarding genetics. The first term which we'll discuss today is hybrid. What is a hybrid? Hybrid is actually a heterozygous organism. Heterozygous organism, as we know that the two alleles for a particular gene are not identical. Both the alleles are different. That is called a hybrid. That is called heterozygous organism. So heterozygous organism, or we can say that a hybrid, what is a hybrid? So hybrid is the organism which is produced by crossing between two genetically different parents. For example, we have one plant that is tall, pure tall, homozygous tall. And the second plant is homozygous dwarf because both the allele are dwarf. Here both the alleles are tall. And when we cross among them, then the organism which we will get, it will get capital T from here, small t from here. So this organism is called a hybrid. So we can say that hybrid is the organism which is produced by crossing between two genetically different parents. And when a hybrid is formed, this hybrid is having dominant character, dominant gene as well as recessive gene. As we know that most of the recessive gene are faulty gene, defective genes. They don't produce the proper polypeptide. Because of that, complete character, complete trait is not appeared. So we can say that in the hybrid there are more dominant genes. That's why hybrids are always better than either of their parents. And this superiority of a hybrid over either of their parents is known as hybrid vigor or heterosis. Important term it is. So what can we say? What is hybrid vigor or heterosis? So hybrid possesses better quality than either of the parents, and this better quality of hybrid over either of their parents is called hybrid vigor or heterosis. Now the next term is F1 generation. Now what is F1 generation? F1 generation is obtained when we cross two genetically different plant. Like I'm taking same example here. A tall pea plant is there. So I will represent this as you know that why I'm drawing here two T, why I'm written, क्योंकि हर एक जीन, हर एक कैरेक्टर के लिए हमारी बॉडी में दो जीन होते हैं. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हाइट, तो हाइट के लिए भी दो जीन हैं. और इस वाले प्लांट में जो प्लांट मैंने लिया, प्लांट नंबर 1, in this particular plant both the gene are same. So that is why this plant is homozygous. फिर मैंने एक second plant लिया, and in the second plant one of the gene for height is small t, another gene is also small t. So both these plants are genetically different plant. And when I will cross them, जब मैं इनके बीच में क्रॉसिंग करवाऊंगी, अब क्रॉसिंग क्या होती है? क्रॉसिंग मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होती है उससे पहले एक स्टेप होता है, दैट इज गैमीट्स बनना. और गैमीट जब बनते हैं तो क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं. अब आपको पता है ये जो दो जीन हैं, बोथ द जीन आर सेम, तो दोनों जीन होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं. तो जब गैमीट बनेगा तो गैमीट में इन दोनों जीन में से एक ही जीन आएगा. तो दिस इज वन गैमीट, दिस इज अनदर गैमीट. Similarly, in this particular plant also, which kind of gamete will be there? Small t, and another gamete will also be small t. Now what will happen? This was the first step in sexual reproduction. क्या होता है सबसे पहले sexual reproduction में? Gametes बनते हैं. कैसे बनते हैं? मियोसिस से. आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में, मियोसिस में होमोजाइगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं. That is why the two alleles also get separated. Now fertilization will take place, where the two different gametes will fuse. This is one of the gamete of one parent, or this is another gamete. इनके फ्यूजन से जो नई जो कॉम्बिनेशन बनेगी, दैट इज कैपिटल टी और कैपिटल टी. और इट मे हैपन दैट दिस पर्टिकुलर कैन कंबाइन विद दिस वन. अगर ये वाला जीन इसके साथ कंबाइन करता है तब भी जो ऑर्गेनिज्म होगा, इट विल बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. सो दिस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग which is formed by crossing between two genetically different parents. Who were the parents here? One of the parent was, so who were the parent children? Yeah, again I have to draw that. This I have drawn.
This was the second parent, and these are the gametes formed. Here gamete will be small t, and when fertilization will take place, all the offspring, this can find with this one, capital, this can go with this one, capital T, small t, this will go with this one. So these are the offspring. And who are the parent? One of the parent is capital T, another parent is small t. And this is the result of their breeding. Interbreeding का result है ये. Result of their crossing we can say. So these offspring are called F1 generation. Clear? Okay, this is about F1 generation. Now the next important term is F2 generation. Now what is F2 generation? F2 generation, as I told in the previous topic where we have discussed about F1 generation. तो F1 जनरेशन कैसे बन रही थी? जब हम दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवा रहे थे, एंड दैट F1 जनरेशन वाज हैविंग दिस जीनोटाइप. ठीक है, तो जब हम F1 जनरेशन के दो इंडिविजुअल्स को लेके आपस में क्रॉस करवाते हैं, दिस इज वन इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन, दिस इज सेकेंड इंडिविजुअल, ये भी F1 जनरेशन का ही है. मतलब F1 जनरेशन का मतलब क्या है इस बात यहाँ पे कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म कैसे बने हैं? जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स को क्रॉस करवा के. क्लियर? अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे इनके बीच में क्रॉस कैसे होता है. तो वी नो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप. पहले गैमीट बनता है, तो इसका एक गैमीट ऐसा होगा कैपिटल टी, और बाकी के गैमीट में स्मॉल टी होगा. हेयर विल ऑल्सो बी कैपिटल टी एंड हेयर विल बी स्मॉल टी. अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. अगर ये वाला गैमीट इस वाले के साथ फ्यूज करता है तो वी विल गेट कैपिटल टी एंड कैपिटल टी. ठीक है. अगर ये वाला गैमीट इसके साथ फ्यूज करता है तो यहाँ से आया कैपिटल टी, दूसरे वाले से आया स्मॉल टी, दिस वी विल गेट. अगर ये वाला गैमीट इसके साथ फ्यूज करता है देन अगेन वी विल गेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, and if this will fuse with this one we will get capital T and small t and small t. So now we will have one of the individual will be homozygous tall. इसको बोलते हैं homozygous tall. कितने हैं? 1. So 2 will be tall but they are not homozygous. tall होंगे क्योंकि एक dominant gene tall है, but they are called heterozygous tall. And the third one is homozygous dwarf. So this is the ratio, 1:2:1. Clear? तो ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, these particular organism which are drawn at the bottom line, these are the organisms of F2 generation. So how we got F2 generation? So this is what we did now. F2 generation is the generation of individual which arise as a result of inbreeding. आपस में ही ब्रीडिंग करवा दी. किसकी? F1 इंडिविजुअल्स के ऑर्गेनिज्म, F1 जनरेशन के जो ऑर्गेनिज्म थे, जब हमने उनकी आपस में ब्रीडिंग करवाई, आपस में ही रिप्रोडक्शन करवा दी, देन वी गॉट F2 जनरेशन. Clear? Now we will go for the next term, that is genotype. Very, very important, children. Very important. What is genotype? Genotype means, in order to explain this, I'll give you simple example. Suppose we have two pea plant. One of the pea plant have these type of gene for height. जो दूसरा pea plant है, it has these type of genes for height. If we look at this first pea plant, it will appear to be tall. And what about the second pea plant? This will also appear to be tall. So both the plants will appear to be tall to us because both of them, they have a dominant gene. Although plant 2 have only one dominant gene, but plant 1 have two dominant genes. So genotype means the total genetic composition of a plant. Total genetic composition of a plant irrespective whether those genes have expressed themselves or not. ठीक है. जैसे यहाँ मैंने बात करी तो यहाँ पे ये प्लांट टॉल है क्योंकि इसमें दोनों जीन डोमिनेंट है एंड दे हैव एक्सप्रेस्ड देमसेल्फ. ये प्लांट भी टॉल है क्योंकि एक जीन डोमिनेंट है और उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, लेकिन जो रिसेसिव जीन है उसने एक्सप्रेस नहीं किया है. तो जब हम जीनोटाइप की बात करेंगे फॉर दिस सेकेंड पर्टिकुलर प्लांट, वी विल कंसीडर दैट जीन जिसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, दैट इज कैपिटल टी,
एज वेल एज दैट जीन जिसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं भी किया है. तो जीनोटाइप मीन्स टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव सारे जीन्स के बारे में बात करते हैं. Clear? So you can have a look here. This term genotype was given by Johnson in the year 1911. So what is the genotype? It is a genetic constitution of individual regardless to one or more character, irrespective of whether the gene they have expressed themselves or not expressed. Now there is one more term, that is phenotype. And what is phenotype? As example I have taken, this was a tree, this was second pea plant. In this particular pea plant it was tall and this is also a tall plant. So जब हम बाहर से देखेंगे, genes are not visible to us when we look at a plant. ऐसा नहीं होता ना, genes we can't see while we look at a plant. Just by looking at the plant we can predict the type of gene, because उस gene ने अपने आप को express किया है and accordingly the character a plant has shown. So हमारे पास अब दो plant थे. This is first plant and this is second plant. जब हमने first plant को देखा, it appears to be tall. तो हमने prediction कर ली कि इस plant में one of the gene must be dominant T. But we are not aware about the second gene. The second gene can be tall, it can be dwarf. Clear? And if we talk about second pea plant, it is also tall. So it is also tall means it, at least one gene is dominant, but what do we know about the other gene? We don't know about that. So this is physical appearance of a plant, of an organism. किस फिजिकली बाहर से देखने पे वो ऑर्गेनिज्म हमें कैसा दिख रहा है, और जब हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं, एक्चुअल में वी कम टू नो ओनली अबाउट द डोमिनेंट जीन. जो रिसेसिव जीन है उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है, सो वी आर नॉट केपेबल टू सी दैट. सो वी कैन सी इन सिंपल वर्ड व्हाट इज फिनोटाइप. फिनोटाइप इज द observable or measurable distinctive structural or functional characteristic of an organism with regard to one or more character which is a result of gene product brought to the expression in a given environment. Or in simple word you can say the phenotype is the physical appearance of an organism. So which definition we can write? We can write it is physical appearance of an organism which is because of its, which is due to its dominant gene only. So whenever we are talking about phenotype, we are talking about a dominant gene only, because we are in the phenotype we deal with the physical appearance, and that appearance is because of that gene जिसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, और वो डोमिनेंट जीन होता है. और रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, इसलिए वो फिनोटाइप में अपीयर नहीं होते हैं. So this term is very very important, children. Here is given difference also. We can read out the difference. That the genotype is the genetic complement of the individual. टोटल कौन कौन से जीन हैं, डोमिनेंट भी रिसेसिव भी. इट इज़ द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द जीन प्रोडक्ट ब्रॉट टू एक्सप्रेशन. उस जीन की वजह से जो एक्सटर्नल अपीयरेंस बनी है उस ऑर्गेनिज्म की, दैट इज़ फिनोटाइप. जीनोटाइप रिमेन सेम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. जीनोटाइप कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन जो फिनोटाइप है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. इन्फेंट, एडोलेसेंट एज, यंग एज, ओल्ड एज पे फिनोटाइप गोज ऑन चेंजिंग. नाउ द जीनोटाइप कैन नॉट बी स्टडी डायरेक्टली. जीनोटाइप को हम डायरेक्ट स्टडी नहीं कर सकते. एज आई टोल्ड कि एक प्लांट को देख के भी कांट से कि उसमें कौन कौन से जीन हैं. हम सिर्फ एक जीन के बारे में बता सकते हैं कि ये प्लांट हमें टॉल दिख रहा है, इट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ द जीन इज कैपिटल टी, बट वी कांट टेल अबाउट अदर जीन. लेकिन फिनोटाइप कैन बी नोन बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फिनोटाइप. जीनोटाइप क्या है, उसका फिनोटाइप पर, उस पर जीनोटाइप पर फिनोटाइप का कोई असर नहीं होता.
लेकिन if we talk about phenotype, then phenotype of an organism is due to the type of gene it is possessing. So genotype has direct influence on phenotype, whereas phenotype don't have any influence on genotype. Clear? Now the next point is, in a given environment or time, individual with similar genotype will produce similar phenotype. जिनका जीनोटाइप सेम है उनका फेनोटाइप भी सेम होगा. But individual with similar phenotype may not belong to same genotype. As I can give example here, we have this plant, other side we have this plant. What is genotype of this plant? हम बोलेंगे इसका जीनोटाइप है कैपिटल टी. व्हाट अबाउट जीनोटाइप ऑफ दिस? इट्स जीनोटाइप इज कैपिटल टी स्मॉल टी. तो दोनों का जीनोटाइप अलग है. लेकिन अगर हम इसके फिनोटाइप की बात करें, इस प्लांट की फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी? इट विल अपीयर टॉल. व्हाट अबाउट दिस? इट विल ऑल्सो अपीयर टॉल. तो दोनों की फिजिकल अपीयरेंस सेम है, लेकिन मीन्स फिनोटाइप सेम है बट जीनोटाइप इज नॉट सेम. Next is, individual with different genotype may have similar phenotype. The same thing I have explained here. It is not influenced by environment. Genotype change नहीं होता, लेकिन phenotype is influenced by environment also. Like our skin color we can say. जो आपका particular skin color है, that is because of the genes we have. लेकिन you might have seen हमारे स्किन कलर में चेंजेस आते जाते हैं सीजन के अकॉर्डिंग. जब हम बहुत धूप में एक्सपोज करते हैं तो हमारी टैनिंग हो जाती है स्किन की, तो दैट इज टेम्पररीली बट. ठीक है, तो वी कैन से दैट फेनोटाइप इज टू सम एक्सटेंड इट इज चेंज्ड विद एनवायरमेंट, बट जीनोटाइप डजंट चेंज विद एनवायरमेंट. So very important these term are. Then the next important term is genome. What is genome? Genome is the complete set of chromosome when every chromosome is taken once only. What does it mean, children? As you know that we are diploid organism. Diploid organism का मतलब क्या है कि we have two set of chromosome. हमारे हर एक सेल में we have two set of chromosome. This is a cell suppose. हमारे पास 1 से लेकर 23 क्रोमोसोम का एक सेट होता है. सिमिलरली वी हैव वन मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम जहाँ पे भी 1 से 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. तो वी हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी. और सेट किसको बोला जाता है? सेट या पेयर किसको बोलते हैं? जब दो चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं. तो इसका मतलब 1 से लेकर 23 तक के जो क्रोमोसोम हैं, वैसे ही सेम सेट हमारे पास एक और है, जहाँ क्रोमोसोम नंबर 1 और उसका क्रोमोसोम नंबर 1 बिल्कुल सेम है, इसका क्रोमोसोम 2 इसका क्रोमोसोम बिल्कुल सेम है. सेम एज एंड तक पहुँच जाए तो इसका 23 और इसका 23 बिल्कुल सेम है. तो हमारे पास 23 क्रोमोसोम का एक सेट होता है, 23 का ही एक दूसरा सेट होता है. ठीक है, तो 2 सेट होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम के, और दोनों सेट में सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. अगर सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम है तो आपको पता है क्रोमोसोम दे कैरी जीन्स, तो जीन्स आर ऑल्सो सेम. तो नाउ व्हाट इज जीनोम? जब हम जीनोम की बात करते हैं तो जीनोम होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं, किसी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में टोटल नंबर ऑफ हैप्लॉइड जेनेटिक सेट. मतलब हैप्लॉइड क्यों बोला? हम तो डिप्लॉइड हैं. हैप्लॉइड इसलिए बोला क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि जीनोम में वी टेक वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम ओनली वंस, लेकिन हमारे हर एक सेल में एक तरह का क्रोमोसोम 2 बार होता है, 2 सेट होते हैं ना. ठीक है, तो दैट इज़ वाई अगर हमसे पूछा जाए कि ह्यूमन जीनोम कितना होता है, व्हाट यू विल से? वी नो वी हैव 46 क्रोमोसोम, लेकिन उन 46 क्रोमोसोम में से वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. सो व्हाट यू विल से? पेयर में से वी हैव टू टेक सिंगल, वी हैव नॉट टू टेक both of them. So we will say that human genome is 23. Right, children? So what is genome? Genome is the total number of genes या total number of chromosome when every chromosome or every type of gene is taken one time only. Clear? That is genome. Now next is gene pool. Very important this term also, gene pool. Gene pool is the aggregation of all the genes and their allele present in an interbreeding population. Suppose हम बात करेंगे एक पॉन्ड की.
एंड इन दैट पॉन्ड, एक पॉन्ड की बात कर रहे हैं सपोज, उस पॉन्ड में बहुत सारे फ्रॉग हैं, ठीक है। और फ्रॉग का कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ले लेते हैं, स्किन कलर। ये वाला फ्रॉग थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का है, ये लाइट ब्राउन कलर का है, ये ग्रे से कलर का है, ये थोड़ा ग्रीनिश से कलर का है, ये येलो जैसे कलर का है। तो दीज ऑल आर, वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर ऑफ फ्रॉग, color of frog, and that is a character. Every character is controlled by gene, but there are different alternative form of this gene. ये वाली इस जीन की, वो जीन जो आपकी कलर को कंट्रोल कर रहा था, उसके कई डिफरेंट फॉर्म थी। कईयों की वजह से कई जी ग्रीन कलर के थे, कई ग्रे कलर के थे, और कई ब्लैकिश कलर का था, कोई येलोइश कलर का था। सो दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन which control the height of the patient of that sorry which control the height, which control the skin color of the frog. Clear? So when we talk about gene pool is the sum total of all the genes. Means हमने जीन डिस्कस किए थे जो उसके स्किन के कलर को डिसाइड कर रहा था, ठीक है। तो कईयों के जीन का कलर था ग्रीन, कईयों का था ग्रे, कईयों का था ब्राउन, कईयों का था येलोइश। इन सब का टोटल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जीन पूल। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके सारे जीन्स और उन जीन्स की सभी फॉर्म्स, ऑल द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ दोज जीन्स, they all together are called gene pool. Sufficient for today. Thank you.